नमस्ते, होप यू डूइंग वेल। आज की चर्चा का विषय चांस तो लेना ही पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे एवरीवन मोस्टली गेट्स अट्रैक्टेड टू द ऑपोजिट सेक्स एंड चाहे वो आपकी सखी हो, जो इसको आप अपनी सखी बनाना चाहते हैं, आपका सखा हो इन केस यू आर अ फीमेल, कि कोई आपको आदमी पसंद आ गया या कोई आपको महिला पसंद आ गई। You have to risk your friendship in order for you or rather them to get attracted to you। अब वो चांस तो आपको उठाना ही पड़ेगा। उसके बिना तो आपकी नॉर्मल एक फ्रेंडशिप सी रह जाएगी और आप नेट नेट जो भाषा में होते हैं कि फ्रेंड जोन कर दिए गए, बिकॉज यू आर नॉट एक्सप्लिसिटली क्लियर अबाउट थिंग्स। जो आप चाहते हैं वो भी आप बोल नहीं रहे। आप चाहते हैं दैट यू सी दैट पर्सन एज अ पोटेंशियल partner of yours in life, perhaps not the life partner, you just want to have a relationship and then think about marriage etc later, if in case if you are a young person and you are pretending to be friends because that is the most safest way to get close to a person। drawback आपकी feeling बताने का ये है that they get offended or they reject you and well then you're back to square one, क्योंकि वैसे भी वो आपके साथ नहीं रहने वाले, whether it's physically, sexually, emotionally, any which way that you wanted that relationship to go out to be, कि जी आपका भी कोई साथी हो। जैसा आपको बचपन से एक नीड होती है हर किसी को, as soon as you hit teenage you start getting attracted to the opposite gender। पॉइंट ये है कि चांस तो आपको लेना पड़ेगा। you have to risk a rejection in order to secure what you really want। and many a times हम लोग काफ़ी जगह ये है कि काफ़ी ज़िंदगी में मौके छूट जाते हैं क्योंकि आदमी चांस ही नहीं ले पाया। और उसका लॉजिक ये है कि चांस लेने के दो तीन फैक्टर है, चांस ना लेने के दो तीन फैक्टर है। उनमें से सबसे बड़ा ये है कि आप में उतना साहस ही नहीं था एंड यू वांटेड ऑल थिंग्स टू बी फेल सेफ, कि बस मेरे को यहाँ फेलियर या मेरे को रिजेक्शन या मेरे को कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस ना हो जाए। जैसे कि काफ़ी टाइम आदमी स्पेसिफिकली we pretend to be friends of the female whom we are heavily interested in, whom we think that if I express my feelings out aloud, she may just completely block me, she may just run away from me, whatever it is। I mean, the rejection is always there, the idea of a rejection is always and forever there, and therefore we just don't take the chance। And at the end of the day फिर हम वो we try to emotionally blackmail the woman into thinking कि अरे मैंने आपके लिए इतना सब कुछ करा, मैंने आपके लिए आपको तो समझना चाहिए था। समझती वो सब कुछ है, समझती। by the way, there is no female that is born on the planet who doesn't understand that you have feelings for her। It's just that she will never initiate, mostly will never initiate this conversation। Secondly, she also needs a male with a spinal cord to at least have the guts to tell her how it is, and then is happy or is fine with the rejection। Can't be happy but really fine with the rejection, you have to accept it। हर किसी की अब इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया या जो भी आजकल की ज़िंदगी है, पहले की भी ज़िंदगी थी, कोई अपनी रिजेक्शंस, कोई अपने फेलियर्स नहीं बताता है और बताने भी नहीं चाहिए, क्योंकि केवल हंसते चेहरे बिकते हैं। रोते हुए चेहरा या सीरियस टॉक्स कहाँ बिकते हैं? हंसते हुए चेहरे, एक फैंसी लाइफ, फैंसी गाड़ी, ये सब बिकता है। एक नॉर्मल एवरीडे रोजमर्रा की जिंदगी कहाँ बिकेगी और बिकनी क्यों है? बिकॉज दिस इज एट द एंड ऑफ द डे एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म। पॉइंट कमिंग बैक इज चांस। नाउ अदर एग्जांपल, तो पहला एग्जांपल हमने डिस्कस करा विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप्स, क्योंकि भैया अगर आप सामने वाले को बता नहीं रहे और लड़को ये उम्मीद कर रहे हैं दैट शी विल फिगर आउट ऑन हर ओन, एंड अच्छा वाइस वर्सा, इट्स नॉट दैट फीमेल्स आल्सो डोंट इमोशनली मैनिपुलेट अ मैन। now this is not individual specific, some may not, some may। तो किसी एक ब्रॉडर जेंडर के ऊपर कोई कमेंट्री नहीं है, जस्ट दैट ऑन अ केस टू केस बेसिस दिस कॉन्स्टेंटली हैपेंस एंड बोथ जेंडर्स आर एट फॉल्ट है। पॉइंट यही है कि मतलब यू डोंट वांट टू हर्ट समवन्स फीलिंग्स, राइट? दैट इज द मोस्ट standard excuse that is given। Perhaps not so true because you are unwilling to take a chance, so be happy। The moral of the entire story before I move on to another example is be fine with things not working out, because n number of times they haven't worked out in life, जो अभी तक आपने चांस लिए, and they may just not work out in life in the future as well, क्योंकि वो भी एक चांस लिया गया था। it may work out, it may just not work out। so स्टॉक मार्केट में अगर आप कॉन्स्टेंटली ट्विटर या कहीं पे भी जाएंगे,
और चेक करेंगे. सो एवरीवन इज आस्किंग फॉर एडवाइस फ्रॉम पीपल कि भैया मेरा फेल सेव करा दे, जो स्टॉक बोलेगा उसमें बस फेलियर नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही पैसे डूब जाए. देखो जी, वो तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. इवन द बेस्ट ब्रेन सर्जन कैन have a really bad day, and or let us say the patient doesn't respond very well to the surgery, brain swells out of the skull, and well, you're gone. You end up in a vegetative state. But let us say that brain surgery was really, really, really required for you to live longer and um, provide peace and happiness to your family, and you want to live a normal sort of life. You have to undergo through that brain surgery. तो उस पर चांस तो लेना पड़ेगा. एग्जाम्पल नंबर 1 इज रिलेशनशिप्स. एग्जाम्पल नंबर इज स्टॉक्स. स्टॉक्स में हमेशा ये उम्मीद, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन एक्सचेंज कॉल्ड FTX, क्रिप्टो एटसेट्रा. It has completely collapsed. So were people really, really fools to have invested here? शुरू में बहुत लोगों ने पैसा भी कमाया उससे. So they took a chance, they exited smartly. अब कोई कहिए एग्जिट स्ट्रैटेजी बताओ, किसी को नहीं पता. जो आपकी गट फीलिंग कह रही है आप वो करें. लेकिन do not follow anyone on social media. It is just a path to disaster, as in do not follow anyone blindly. There is no need to consider anyone as a devta, because each of us is a human being and each of us has our flaws. Gives me the idea for the next discussion कि व्यक्ति पूजा नहीं करनी है. Okay, relationship हो गई, stock हो गया. Then for example, any business, any money that you want to put into your business and are thinking that this will work out, chance liya, it doesn't work out, so what? There's always a 50-50 side to it. कि chance of working out is 50, chance of not working out is 50. Be fine and be mentally at peace कि chance लिया था, it didn't work out. Alright. Now बहुत सारे उसके उदाहरण हैं. Like जब भी आप बड़े होंगे, अब जैसे for example, is LLB really a sure shot way to success? Maybe chance है, और chance नहीं भी है. काफियों का कुछ कोई दाल नहीं गलती इस प्रोफेशन में, काफियों की बहुत ज्यादा गल जाती. अरे लेकिन उनकी क्यों गली है? फिर मैंने वो हार्ड वर्क डेडिकेशन देखा. तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको काफी जगह ये समझ में आएगी that संजोग, fate, destiny, भाग्य, etc., whatever you want to call it, plays a big role in n number of people's lives. लेकिन चांस तो आपको फिर भी लेना पड़ेगा ना जी. चांस लेके तो देखो. इफ इट डजंट वर्क आउट, एटलीस्ट जीवन में ये तो नहीं रहेगा कि यार रिग्रेट के साथ मर रखे. तो रिग्रेट की जिंदगी बहुत बहुत खराब है. मान लेते हैं यू टर्न 50 एंड यार उसको अगर मैंने उस टाइम बड़ी क्लियरली बोल दिया होता तो पता नहीं कहाँ से कहाँ ही होती जिंदगी. You don't want to live with this regret, buddy, because regret kills you. Regret is the worst sort of mental cancer that can ever hit you. So the only way to prevent regret is to take a chance and be happy and fine with it. It may just not work out. So what? So what? Let us say किसी ने judiciary exam बड़ी शिद्दत से, बड़ी dedication से, they took the best shot at it that they could possibly ever take. And it still didn't work out thanks to, let us say, reservations, low number of seats, etc. जीवन में ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि यार एक बार तबीयत से शॉट देके तो देखते हैं. क्या पता our attempt may just have fructified or have given the result, whatever. Regret is the worst sort of depression, and the regrets start mounting as soon as you start crossing your 30s, because now pretty much half your life is over, and if you haven't really taken chances, and let us say that you did take a lot of chances and a lot of them did work out, you will start to get hit with depression, and your ability to take chances will become less and less. So you have to keep this mental attitude कि chance तो लेना ही पड़ेगा, whatever domain it is. And मैंने specifically relationship वाला quote करा because I think 2021 वाली age पे, that is primarily the age that this channel watches. तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा काम एक रिलेशनशिप और पैसे ही समझ में आ रहा होता है. बाकी तो अलग चीज़ें हैं, बाकी तो ज़िंदगी जो बची हुई है वो अलग है. मतलब जो डोमेन्स है ज़िंदगी के वो अलग हैं. काफ़ी ज़्यादा लोग इस टाइम पे इंटरेस्टेड नहीं होते. तो चांस तो लेना ही है, पॉइंट नंबर 1. सेकंड, ताकि हम जीवन रिग्रेट में ना बिताएं. ऑलराइट. एंड थर्ड, we have to be fine with chances not working out. We have to be fine. Tell ourselves, now this is not a one day story that I've told myself that I'm fine with the chance not working out. So what? It takes a lot of time to train and program yourself this way. This is not a one day stage that I've reached. Over the years, I've constantly reminded myself कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, it didn't work out. So what? At least regret तो नहीं रहेगा. मैं आपको एक real life example बताता हूँ. One of my ancestral properties, उस पर कब्जा हो रखा.
कब्जा is somebody has illegally occupied that. तो उसमें और ज़्यादातर मतलब उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं. तो legally speaking, as in paper wise, etc. etc. For the last 1 year, or rather 6 months now, that I hired someone as a mediator, as a middleman to sort everything out. He has pretty much done the job 70%, but 30% is still left, and perhaps, मतलब ईश्वर करे कि ऐसा ना हो, but perhaps let us say that it doesn't work out. I have no regrets with respect to that episode. At least I tried, so that tomorrow myself doesn't talk back to me saying that you could have tried back then and saw what came out. At least we could have attempted to recover that property. Maybe ईश्वर की कृपा करे, टचवुड as in, वैसे तो टचवुड के भी अलग अलग ही फंडे हैं, बट ठीक है, जस्ट कॉमन पार्लेंस में टचवुड कह देते हैं. तो maybe it works out. Maybe it actually does work out. This very January, I am expecting it to work out. But let us say that it doesn't work out. I won't kill myself over it. And I've spent a decent amount of money in trying to resolve that property out. So what? It doesn't work out. So it doesn't work out. Attempt to दिया. Attempt देना ज़रूरी है और पूरी force के साथ देना ज़रूरी है that you gave your best shot at it. Didn't work out तो ईश्वर, अगर आप ईश्वर में मानते हैं तो आपने कृष्ण जी पे छोड़ दिया, या कोई भी देवता जिसको भी आप मानते हैं आपने उन पे छोड़ दिया. और अगर नहीं मानते, ठीक है, नास्तिक टाइप आदमी है, तो कोई बात नहीं, आप कह दीजिए इट वाज़न्ट मेंट टू बी वर्कड आउट, व्हाटएवर इट इज. दिस लॉट ऑफ पैरेलल टाइमलाइंस ऑपरेटिंग ऑन दिस प्लैनेट. आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, होती हैं. स्टडी प्रैक्टिस, स्टडी एंड प्रैक्टिस इट. हमारे सारे अध्यात्म इसी सब पे टिका हुआ है. एनी विच वे, another example that I'll give you before we wind up this conclusion so that it doesn't get boring. I'm sure that if you're watching this by now, you're still not bored. You see these boxes? Earlier our courses were purely online. We have added these physical elements. So इसके अंदर हम किताबें at our own cost we procure etc. डब्बे में डाल के courier करा के भेजते हैं. DULB next year goes to CUET PG, and hopefully they get a new question paper code specifically for law. Even if they don't, I'm pretty much fine with the teaching, at least for this year, and may just be our last year in that exam, if they don't go in for the question paper code. Now I've done this, and there's a significant amount of investment in these boxes and these books, etc. I have taken a chance. It works out great. Doesn't work out, I'm still fine with it. Not happy about it. Being happy is a lie. But I'm fine with it, because at least हम उस साल तो कह रहे हैं यार 2022 के बाद भी कुछ चेंज भी नहीं लाया है, कुछ अपग्रेड किया होता, ऐसा किया होता तो ऐसे हो जाता. Alright? So chance, regret, and being fine with chances not working out, and be very, very fine or mentally at peace with this fact that a lot of things you do in life, they may just not work out, and that's how life is. And all of these folks online with their success stories ज़्यादा हो जाती है इनकी मैं, मतलब being obsessed with themselves and calling themselves the goat. तभी तो मैं बकरा ही अपने आप को कह रहे हैं. तो खैर इस पे भी चर्चा करते हैं. मैं is pretty much irrelevant on the long run on the planet. तो moral of the story again, chance लेना ज़रूरी है, else you will be standing where you are right now. Regret, ताकि regret की ज़िंदगी आप ना जिए, and you are okay with the chances not working out. अब हाँ, ऑब्वियसली कैविएट इज अ वार्निंग कि आप अगर आप मान लो 5 करोड़ रुपए की आपने प्रॉपर्टी खरीदनी और आप जाके 15 करोड़ में खरीदा है कि चांस तो लेने को किसी ने बोला ही था, मैं वहाँ पे आप गधे हैं. और ये बात आपको समझनी है दैट कैविएट एम्प्टर, बायर बिवेयर, यू हैव टू डू योर ड्यू डिलिजेंस बिफोर टेकिंग दैट चांस, एंड इफ इट इज मेकिंग सेंस फॉर यू टू टेक द चांस, गो ahead. It is still not guaranteed that will work out, but at least you won't live a life full of regret, which causes an insane amount of depression as soon as you cross your midlife, that is somewhere around the 30-35 odd mark. Alright, now with that, having said that, I will see you in a day or two with more such sessions. Hopefully this has been of help to you. Wishing you all the very best. Take care.